So welcome back students to standard 10th physics chapter 10 light, reflection and refraction, and this is the 8th session. Children, there is one very important formula, okay, which gives you relationship of focal length, object distance and image distance of curved mirror, whether it is concave or convex. All right. Here is the formula, children. 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U. F focal length, V image distance and U object distance. To derive this formula, mirror formula, all right children, first we need to know what is Cartesian sign convention for the reflection by spherical mirror. All right children, so let's first get acquainted with Cartesian sign convention. All right. Now, can you see a concave mirror here? M dash. This is concave mirror. This is pole P. This is center of curvature C. And exactly in between the pole and center of curvature, there is F. Focal, principal focus. It is called principal focus, या focal point. Children, the distance between P and F, the distance between P and F, the red one, is called focal length. उसे हम focal length कहते हैं. How far is principal focus from pole? All right? Okay. And the distance between pole and center of curvature, that is called radius of curvature. That is called radius of curvature. क्योंकि आप देखो यहां से वो hollow sphere का सेंटर है, सो ये रेडियस बना के नहीं, स्फीयर का रेडियस बना, that is called radius of curvature. All right children, we have already defined those terms. Okay. Now mathematician, Cartesian, you have learnt Cartesian coordinate system. He called horizontal axis as x-axis, x-x dash. Correct? उसके Cartesian coordinate system में he draws one horizontal line and called it x-axis. Correct, children? Okay. Now, here the principal axis, the imaginary line which passes through pole and center of curvature, Cartesian called it x-axis. All right. He called P as origin, the pole as origin. All right. So through origin, through pole, he drew one more line which is perpendicular to x-axis, and the line perpendicular to x-axis is y dash, or you call it as y-axis. All right children. Okay. Now this is y-axis. You know, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. Okay. और ये y axis के ये बाजू, this side. All right. क्या आएगा? -1, -2, -3, -4, -5. Correct? All negative numbers. So if object lies here, this distance of object is taken negative. If image lies here, again the distance is taken negative. Okay. And all the distances are measured from pole. All the distances are measured from pole. So if object is here, we start measuring the object distance. Say suppose this is object. Then we start measuring the object distance from pole. हम यहां से लेंगे ऐसे ही. 0 mark here और इस तरफ measure करेंगे. This is image. So we start measuring from the pole. ये first mark है, आप देख सकते हैं like this. So ये बाजू से ये बाजू measure करते हैं. Is that clear to you children? Okay. So y axis के left में जो भी measure करते हैं, it is taken negative, क्योंकि x axis पे negative numbers है. अब x axis पे origin के right में positive numbers है. All are positive numbers. करेक्ट, ये सब प्लस है.
So if object is here to the right, okay, to the right of y-axis, then the object distance is taken positive. Is that clear? Children, you have the height of the object also. If the object is erect, then height is taken positive. And you can see the image here. It is inverted. Alright. And when image is inverted, its height is taken negative. If the image is here and erect, then the image is taken positive. So object and image, if it is erect, it is taken positive, and if image is inverted, its height is taken negative. This is all that Cartesian decided. Is that clear to you? Children, what Cartesian explained actually, say this, this is how you are going to measure the distance. आप जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से मापोगे, करेक्ट, सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम P एंड मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. आप मेजरिंग टेप यहां लेंगे और इस तरफ एक्सटेंड करेंगे. सो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रीन कलर दैट यू सी. बट ऑब्जेक्ट यहां है, सो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाएंगे. सो द टू डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. टू डायरेक्शंस are opposite to each other. Which direction? The direction of propagation of incident ray and the direction in which the distance is measured. And when the two directions are opposite, the distance is taken negative. Alright? The distance is taken negative. जब opposite direction हो तो distance is taken negative. अब यहां देखो, suppose कि image is here. So distance is measured from pole and in this direction. So this is the direction in which the image distance is measured. Alright? और object तो यहाँ है. The direction of propagation of its incident ray is same. यही है. तो देखो, direction of measuring the distance is this. Direction of propagation of incident ray is this. So both the directions are same. At that time, the distance is taken positive. लेकिन हमें सिंपल भाषा में याद रखना है, y एक्सिस के लेफ्ट में आया तो नेगेटिव, y एक्सिस के राइट में आया तो पॉजिटिव. या ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में देखेंगे तो इट ऑलवेज स्टैंड्स इरेक्ट, तो दैट इज टेकन पॉजिटिव. इमेज की हाइट के बारे में देखेंगे तो इन्वर्टेड होगा तो यू हैव टू टेक इट नेगेटिव, और इरेक्ट होगा देन यू हैव टू टेक पॉजिटिव. चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. All right, it is very important when we derive the mirror formula. So let's see what we learned. Children, enter this answer in your notebook. Is that clear to you? It's very important. All right. So here's all what I explained to you in Cartesian sign convention. One question can be asked. Give Cartesian sign convention for the reflection by spherical mirror. Here is the figure, children. Can you see the object AB here? Correct? ये y axis है और उसके left में है. So this distance is taken negative. Correct? See, distance towards left, it's taken negative. Alright. Image को देखो. It is also to the left of y axis. So that is also taken negative. Alright. This is the direction of incident ray. This is the direction of measuring the distance. They are opposite. When the directions are opposite, it is taken negative. Distance towards right are taken positive. क्यों? Direction of incident ray and direction towards right both are same. So distance is taken positive in that direction. Is that clear to you, children? हमें याद रखना है y एक्सिस के लेफ्ट में एनीथिंग मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव लिखना है. y एक्सिस के राइट में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लिखना है. आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस अबाउट द डायरेक्शन बिकॉज दैट इज व्हाट कार्टेशियन डिस्क्राइब्ड व्हेन ही गेव द साइन कन्वेंशन, एंड एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन इट. ऑलराइट, ये रहा इरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाइट अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव. P इज टेकन एज ओरिजिन, पोल. इज दैट क्लियर? यहां P से आप B तक जाएंगे
तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड सिंबॉलिकली इट इज टेकन एज u. चिल्ड्रन पे अटेंशन प्लीज. और ये b डैश से p तक जाएंगे तो उसे कहते हैं इमेज डिस्टेंस. इट इज इमेज डिस्टेंस and the symbol is small v. All right, children. Say suppose here is center of curvature. तो ये डिस्टेंस यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से p पैरेलल ले लो, डिस्टेंस पैरेलल. ऑलराइट, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द सिंबल इज कैपिटल R. कैपिटल R लिया गया है. ऑलराइट चिल्ड्रन, और ये C और P के एग्जैक्टली बीच होता है F. करेक्ट, दैट F और P के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड द सिंबल टेकन इज स्मॉल f. दैट इज व्हाट वी हैव इन द मिरर फॉर्मूला. 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. Children, if this question is asked, you have to draw this figure. आपको ये फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, एज शोन इन द फिगर, द पोल P, दिस वन of the mirror is taken as origin of the Cartesian coordinate system. So this P is taken as origin. All right. The principal axis of the mirror is taken as x-axis. ये जो imaginary line है passing through P and C, which is called principal axis, that is taken as x-axis. And the axis drawn perpendicular to principal axis at pole. You can see this axis which is drawn perpendicular to principal axis at pole. That is called or considered as y-axis. The following sign convention is used to represent the distances related with reflection by spherical mirror. First, the object is on left side of the mirror. Mirror के left side पे ही object को रखा जाता है. Means the light rays are incident from the left side of the mirror. Correct. जो भी incident ray है उसका direction left से है, left से right तरफ है. Correct. All the distances are measured from pole. Pole is the origin. तो किसी का भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, फोकल पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस लो, you have to start measuring from pole. So all distances are measured from pole of a mirror parallel to principal axis. देखो ये लाइन में दो चीज मैंने ऑलरेडी मेजर कर दी. मुझे ये पीसी भी मेजर करना था तो मैं ये यहां ड्रॉ किया. वो एक्स एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो ऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ये ऑब्जेक्ट और पोल के बीच डिस्टेंस मेजर करना है तो ऐसे मत करो, ऐसे. राइट. वो आपको P और B के बीच का डिस्टेंस ऊपर लेना हो डिस्टेंस तो ऐसे पैरेलल ले सकते हो क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. ये डिस्टेंस देखो, इट इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. दैट मीन्स टुवर्ड्स राइट. All right, are taken positive. The distance is measured in the direction opposite to incident ray. That means towards left. देखो ये incident ray, ये distance दोनों opposite है. એટલે towards left opposite. They are taken negative. The height measured upward. जैसे object को देखते हैं. And perpendicular. Yes, this object is always taken perpendicular. Image is always taken perpendicular to the principal axis is taken negative, positive. The height measured downward and perpendicular to principal axis is always taken negative. Is that clear to you, children? Fine. So let's go for the derivation of mirror formula for any mirror. Convex mirror ho ya concave mirror ho. 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. And that's the mirror formula. So let us derive mirror formula. Okay. Are you ready? Fine. All right, be very watchful and please be very attentive. Here is concave mirror. I have taken concave mirror. You can take convex mirror as well. All right. So here is center of curvature and this is pole. I'll take the measure and obtain its midpoint.
This is around 6.8. So I'll take 3.4. That is the midpoint. This is focal point. Correct? Alright, children. Yahan very light. I'm going to draw that y-axis. Alright. Now this distance. Focal point yahan. Ye distance. Yahan. Alright. Object I'm placing beyond C. Children, object can be placed anywhere, but placing it beyond C is most convenient. Alright. So here is one object beyond C. C se thoda dur. Alright. That is the object A, B, and it stands erect. Alright. तो यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है. देखो मैं क्या कर रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट के साथ यहां मार्क, सी के साथ एक छोटा सा मार्क, एफ के साथ एक छोटा सा मार्क. ऑलराइट. नाउ यू नो फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. देखते हैं इमेज कहां फॉर्म होता है. फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस. करेक्ट. ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे. द सेकंड रे इट पासिस थ्रू एफ या सी, लेकिन यहां मुझे सी वाला लेना है. द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सी. This is incident ray. Correct. You know, sorry, yeah, this is incident ray, and you know it bounces back in the opposite direction. So this is reflected ray, and the image is formed here, right? लेकिन ये inverted होगा. This is A dash and this one is B dash. Is that clear? चलिए, मैंने फोकल पॉइंट से यहां डिस्टेंस लिया, C से यहां डिस्टेंस लिया, B से यहां डिस्टेंस लिया. करेक्ट. अब इमेज से भी ले लो. यहां नीचे देखो, आई हैव टेकन वन बिलो द अदर. नाउ दिस डिस्टेंस, इतना, ये डिस्टेंस, ये लाइन और ये लाइन के बीच, दैट इज फोकल लेंथ. दैट इज फोकल लेंथ. ऑलराइट. यहां से यहां. फिर ये डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर. करेक्ट. यहां से यहां वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस. करेक्ट. चलिए, नाउ ये डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है. दिस इज ऑब्जेक्ट. हियर इज इमेज. सो हाउ फार इज ऑब्जेक्ट? ये, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां. ऑलराइट. एंड नाउ इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस, दैट इज इमेज डिस्टेंस. ऑलराइट. ऑलराइट चिल्ड्रन, फाइन. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज PC, ब्रैकेट में लिखूं PC, दैट इज इक्वल टू. अब C y एक्सिस के लेफ्ट में है, सो यू हैव टू टेक इट नेगेटिव. और रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल कैपिटल R, सो माइनस R. ऑलराइट. देन लेट मी टेक फोकल लेंथ. द सिंबल इज स्मॉल f. करेक्ट. अब वेयर इज फोकल प्रिंसिपल फोकस? या टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, सो इट ऑल्सो हैज टू बी टेकन नेगेटिव, and the symbol is F, right? फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसका सिंबल U है. अच्छा, वेयर इज ऑब्जेक्ट? y एक्सिस के लेफ्ट में. इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड माइनस U. एंड इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस स्मॉल v. ऑलराइट. वेयर इज द इमेज? हियर टू द लेफ्ट, so minus NV. This is very important. You have to take great care of signs, children. All right, children. Now, children, you want to involve this object distance. So let us see the object distance in the figure. Object is located at B and its distance from P. Correct? Let me complete one triangle. ये red line PB is object distance. I make object also red. So I can join AP to make a right angle triangle. Why I am doing it?
Soon you will know it. All right. Okay. So that is object distance containing right triangle. Object distance P now becomes one side of right triangle. Is that clear to you? Now I'll choose image distance, that is PB dash. Try to understand, children. This is PB dash, और image को भी ले लेते हैं. That is image, and this is right angle. We know that, correct? And let's complete the right triangle. Here it is. Correct, children? Okay. Sure. Understood? So you got two right triangles. ABP, A dash B dash P. Children, in this triangle, this is right angle, this is right angle. So one pair of corresponding angles is equal. यहाँ similar triangles recall करना होगा. और children, see this incident ray. ये incident ray at pole. और pole से pole पे तो ऐसे ही plane mirror आएगा ना. So this angle of incidence and this becomes angle of reflection. They will be always equal. So angle B is equal to angle B dash and angle APB equal to angle A dash PB dash. So by A corollary, the correspondence is similarity. आपको ये मैथ्स में लिखना है या साइंस में नहीं लिखना है. Now सीधा लिखो. Now triangle A dash B dash P, वो correspondence भी याद रखना बहुत easy है, is similar to triangle ABP dash. ABP, sorry, ABP and A dash B dash P. All right, by AA criterion. इतना लिख दो. That's it. Okay. So now you know when two triangles are similar, you have the ratios. A dash B dash, that is the height of the image, upon A dash B dash लोगे तो A भी मिलेगा. You will get height of the object. So height of image upon height of object. Then what I am going to involve? Yes, image distance, which is PB dash. So ये लूंगा PB dash, PB dash, PB dash. यहां से PB dash को corresponding PB है, PB. All right. और I am not interested in AP or A dash P. सिर्फ इतना लेता हूं. All right. Therefore A dash B dash upon AB is equal to, चिल्ड्रन यहां PC लिखा ना, तो मुझे भी यहां यही लिखना चाहिए था. मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं. फोकल लेंथ इज PF, ब्रैकेट में वो लिखो. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज PB and image distance is PB dash. So it will be more convenient. Now see what is PB dash? Minus V. And what is PB down? Minus U. That gives you A dash B dash upon AB is equal to minus minus cancels. So V upon U. Call it result number 1. Is that clear to you, children? Sure. Have you followed? All right. Now, one more pair of triangles we have to take, which involves the height of the object and height of the image. All right. तो यहां मैं एक ग्रीन पार्ट लेता हूं जो हाइट है. बेस तो मुझे लेना ही पड़ेगा, वो सिर्फ C तक लेता हूं, only till C, and I complete the hypotenuse AC. So I got this green triangle, children. ये green triangle मुझे मिला, right? अब I am going to choose other triangle जिसमें ये height of the image is involved. Yes, उसका बेस मुझे ये लेना होगा. I'll have to take this base. पेंसिल से मैं काम कर रहा हूं, तो ये उसका हाइपोटेनियस होगा राइट ट्राइंगल का. तो ये ट्राइंगल मुझे मिला, चिल्ड्रन. दिस ट्राइंगल, कैन यू सी? नाउ दिस टू ट्राइंगल्स इन दिस ग्रीन एंड ब्लैक ट्राइंगल, ऑलराइट, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये राइट एंगल. सो दे आर ऑल्सो सिमिलर बाय ए क्राइटेरियन. आपने यहां नाउ लिखा था, नाउ आई एम राइटिंग ऑल्सो triangle. Again, A dash B dash is bar C. A dash B dash C is similar to triangle
आई टोल्ड यू कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत आसान है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी बाय ए क्राइटेरियन, करेक्ट क्राइटेरियन। चलिए अब ले लो ए डैश बी डैश हाइट ऑफ द इमेज अपॉन ए बी, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द हाइपोटेन्यूस, सो ये बी सी, या दिस बी डैश सी अपॉन you will get BC, correct? Now it's going to be very interesting children, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑलराइट, मुझे B डैश C आपको मैं दिखाता हूं, वेयर इज B डैश C, दिस इज B डैश C, ऑलराइट, B डैश C। आपका सब मेजरमेंट P से करना है ना, सो P डैश B डैश C यहां लिख लीजिए, P डैश B डैश C है ना, P से C सबसे दूर और बीच में B डैश आया, सो जस्ट राइट P डैश B डैश C, सो PB डैश प्लस B डैश C इज इक्वल टू PC। होता है क्या नहीं होता है, टेल मी, बिटवीन एस PB डैश प्लस B डैश C इज इक्वल टू PC। ऑलराइट, मुझे चाहिए B डैश C, मुझे ये चाहिए, देयरफॉर B डैश C इज इक्वल टू PC माइनस PB डैश। हुआ क्या नहीं चिल्ड्रन? सो हियर आई एम राइटिंग B dash C is PC minus PB dash upon. Very interesting children, be careful. Now it is BC, down we have BC, ये पार्ट BC है ना, BC आपको मेजर करना है P से, और ये B और C सबसे दूर है B, ये 3 पॉइंट में, so P dash C dash B. Now what you got? P dash C dash B, so PC plus BC is equal to PB. You are interested in BC. So BC will be PB minus PC. So here you have PB minus PC. Alright children? Okay? Sure? Please take a screenshot and copy this. Okay? Because I am going to continue on the next page now. Alright children? Fine, I will be continuing here. Okay children? लेकिन इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आपको देखते रहना पड़ेगा चिल्ड्रन। या इट विल बी लाइक लिटिल बिट डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट द वर्क ऑन वन पेज, बट दिस इज टू लेंथी टू कंप्लीट ऑन वन पेज। ऑलराइट, चलिए नाउ आई विल राइट हियर देयरफॉर A dash B dash upon AB is equal to A dash B dash upon AB, PC माइनस PB डैश। PC कहां है आपको, सब यहां से मिल जाएगा, माइनस R, सो राइट माइनस R, देन यू हैव दिस माइनस, सो आई एम पुटिंग माइनस, देन यू हैव PB डैश, हियर इट इज PB डैश माइनस V, बी केयरफुल, राइट माइनस V, ऑलराइट, अपॉन PB, where is PB? Here, correct, that is minus U, so write whole upon minus U, then you have that minus sign, so minus, and then you have PC, where is PC? Here, it is minus R, so minus R, yes, this is minus R plus V, minus minus, and minus U plus R, therefore A dash B dash upon AB is equal to this, call it result 2. Now look at result 1, A dash B dash upon AB, result 2, A dash B dash upon AP, so left hand sides are same, A dash B dash upon AB is equal to V upon U, A dash B dash upon AB is equal to minus R plus V whole upon minus U plus R, they are equal, so by 1 and 2 it follows that, by 1 and 2 it follows that, it follows that, what is that? V upon U is equal to minus R plus V upon minus U plus R. Okay children, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, so V into minus U plus R is equal to U into minus R plus V. Make R subject of the formula, क्योंकि हमारी फॉर्मूला में R है ही नहीं, है ना, जो मिरर फॉर्मूला उसमें R है ही नहीं, so make R subject of the formula. So how to do that? Therefore this is UV with minus sign,
RV with plus sign, UR with minus sign और UV with plus sign. करेक्ट चिल्ड्रन? आपको R वाली टर्म एक साइड पे करनी होगी. You want to make R subject to the formula, so take this term on other side. So that is RV, इसको वो बाजू ले जाएंगे, प्लस UR इज इक्वल टू UV प्लस UV. ये वो बाजू गया. R कॉमन निकाल लीजिए. सो V प्लस U इज इक्वल टू 2 times UV. Correct children? Make R subject of the formula. So R is equal to 2UV upon V plus U. Children, इसको दो टर्म में स्प्लिट करना है मुझे. आई वॉन्ट टू स्प्लिट दिस एज 2 टर्म्स. ये तो एक ही टर्म है. आप इनवर्स कर दोगे तो वो बन जाएगा. Therefore, I am taking inverse. Inverse of R is 1 upon R. That is equal to yes, V plus U upon 2UV. Correct? Inverse कर दिया ना. Take 2 on other side. So 2 will multiply with 1. So it becomes 1 into 2 upon R is equal to V plus U upon UV. आपको दो टर्म बनानी थी. Now you can get the success. 2 upon R is equal to V upon UV plus U upon UV. Correct children? So here V is going to cancel, here U is going to cancel. Therefore 2 upon R is equal to 1 upon U plus 1 upon V. Call it result number 3. Children, we are very close. लेकिन यहां तो R आया, हमें चाहिए F. We want the relation between object distance, image distance and focal length, not radius of curvature. So हमें अब आगे बढ़ना होगा. Children, now pay attention. Here is concave mirror. Alright? And this is center of curvature. This is F. This is pole. If the object is placed at infinite distance, object is at infinite distance, children. Alright? Then you know image is formed at F. याद है आपको? Okay. So this is image distance. ये image distance है. So you can say image distance is equal to F when object distance is equal to infinity. This is how we write infinity. Alright? The object distance is infinity. Alright? So we'll write that when object is at infinite distance, the image is formed at focal point, or you can say principal focus, in front of concave mirror. This is very interesting, slightly difficult. Therefore, object distance जिसे हम U कहते हैं, is infinity, and image distance which we call it V is equal to F. Image distance is focal length. यहां से यहां इमेज यहां फॉर्म हुआ, सो जो फोकल लेंथ है वही इमेज डिस्टेंस हुआ. Therefore 3 gives, रख दो, 2 upon R is equal to 1 upon U, that is infinity, plus 1 upon V, that is 1 upon F. U की जगह पे infinity और V की जगह पे F. Now children, do you know what is 1 upon 0? Yes, we write it infinity. ट्रिगोनोमेट्री में हमने देखा है. तो अब इनवर्स कर दूं, 0 upon 1, तो ये 1 upon infinity हो गया. So what is 1 upon infinity? 0. So 1 upon infinity is 0 plus 1 upon F, that is 2 upon R. This gives me, यहां से, this gives me 2 upon R is equal to 1 upon F. Cross multiplication. So 2F is equal to R. Call it result number O. R equal to 2F. तो R को सब्स्टिट्यूट कर दो, गायब यहां से. राइट? सो बाय 3 and 4, by 3 and 4, it follows that
अपॉन आर, आर की जगह पे लिख दो 2f इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, 2 कैंसल, therefore 1 upon f is equal to, I'll write 1 upon v first, image distance वाला पहला, plus 1 upon u, addition is commutative, okay, and this is called mirror formula. Is that clear? So here it is. I hope children you understood this. Do it again and again. In your textbook this derivation is not given, but you have to remember this formula very much for solving the word problems. Alright children? So that's all in this session. See you in the next session. Till then, goodbye.